People often say to me that you're extremely lucky to have found your purpose. However, purpose is not something that we find. We attune ourselves to our natural inclinations and we cultivate it through deliberate actions. A bud's purpose is to know how to bloom and flower. A flower strives to spread beauty and fragrance, giving nectar and pollen to the birds and the bees. A leaf aims to nourish the plant, but it must also learn how to loosen its grip on the branch when the autumn breeze blows and it must fall to the ground. And similarly, a fruit or a seed must be willing to be carried by the wind and sprout wherever it finds anchor. Nature understands how to attune to purpose spontaneously, naturally. But when we think of purpose, we believe it must be something extraordinary, something majestical, something very grand. And mostly we think that this happens in our middle life. Every day when I hear elders in the community, in my clinical practice, and they're all saying, "Bas ab kya jeena hai, ab to routine ki zindagi hai," and it's the same old thing. They feel they've discovered everything about life. And there is a kind of very low despair that I sense in them. They don't seem to be looking forward to anything. And to all of those who believe that, I say, each life stage has its own purpose. Each stage has its own gift. Birth brings us hope. Adolescence ignites our passions. Adulthood brings patience and benevolence. And approaching death makes life all the more valuable. In a research that was done recently amongst people, between the ages of 50 and 92 years of age, it was found that a mere 30% reported living with purpose, which is a very sad thing. Unfortunately, old age arrives often with a diminishing sense of purpose and direction. And this is the reason that I have chosen to speak on this topic today. When we hit that half-century mark, what is our purpose? How should we walk into the sunset years with a definite inspiration? Kaise kare? And that is what I'm here to discuss today. So let's look at the 50s. When we enter the 50s, what is happening to us physically? Our bodies are beginning to age and change. Women are probably hitting menopause if they haven't already hit it. Men are preparing to hand over the baton of their businesses in their large organizations, their leadership function to the younger teams. And therefore, the theme of the 50s must be completions. And a purpose has to be altruism, meaning we must work for the welfare of others. This is also the time that in the Hindu Dharma, we mark 50 as the arrival of the Vanprasthashram. And what does Vanprasthashram really mean? That you are now becoming the forest dweller, the forest walker. ये समय है जब आप जंगल की तरफ चल रहे हैं. अब वहां पे करना क्या है? 5 key goals and aims which will give us purpose in our 50s. First, assist future generations. आने वाली पीढ़ियों को हमने उत्साहित कैसे करना है? We serve them. We contribute towards mentoring them, teaching them everything that we have learned from our lives, we will pass on to them. And we volunteer our efforts so that we can become their guides and their leaders. If we are not able to do that, if we are not part of an institution or an organization, if we are a mere
होम मेकर, कोई हाउस वाइफ है या सिर्फ एक घरेलू जिंदगी जी रहा है, तो वो क्या करेगा? I have a client who I work with on life coaching and spiritual development. He's in his 50s. And after every session, he copiously writes the lessons that he has learned. He's written over 100 pages on his understanding of life. उसका निचोड़ उन्होंने क्या निकाला है, और वो अपने बच्चों के लिए वो डायरी छोड़ के जाना चाहते हैं, ताकि वो कहते हैं मेरे जीवन से उनको प्रेरणा मिल सके. So we don't have to be anybody extraordinary or special to be able to mentor our own next generation. What does our life stand for? What is the blueprint of life? हमने अपने 50 सालों में क्या सीखा है, उसका तत्व निकाल के, और अगर हम उसको लिख डालें या किसी का उसका वीडियो बना डालें, तो आने वाली पीढ़ियां जो हमारी है within our families, they will really benefit from it. Second thing, 50s is the period when we are sandwiched between two generations. एक तरफ से their parents who are growing older, they may need special care, illness, disease, hospitalization. और दूसरी तरफ से बच्चे जो बड़े हो रहे हैं और उनकी डिमांड्स कुछ बदल रही हैं, वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, हो सकता है हमारी बात सुन भी नहीं रहे हैं, हमारे साथ अलाइन भी नहीं कर रहे हैं. How do we balance these two generations and we are stuck in between them? How do we provide them both a combination of care, independence, freedom, honor, and respect? Ye balancing act, this takes a lot, and this becomes a purpose in the 50s. Thirdly, it's very important कि इससे पहले जो हम 4 decades जिए हैं, उसमें we were very caught and stuck in the existential crisis. How to earn a living, बच्चों को पढ़ाना कैसे है, प्रॉपर्टी बनानी है, घर बनाना है, जोड़ना है, ये सब चीजों में इतने व्यस्त रहे हम कि we have not been able to ponder over life's mysteries. It's very important. 50s is a very important age when we have to start understanding the universal laws that dictate our experiences. हमारे साथ अच्छा क्यों हो रहा है, बुरा क्यों हो रहा है? What is the theory of karma? How are we creating our future lives? This becomes very important. We have to start living the life of our soul from this. 50 साल की उम्र से हमें अपनी आत्मा के जीवन को समझना है, which we've never really had the opportunity prior to this. There is a fourth very important aspect, and it's a mystical aspect. I call it reclaiming lost paths. What do I mean by this? जब भी हमारे साथ कोई भयानक घटना घटती है, whenever we have a very traumatic experience, and every individual has had such an experience at least 4 or 5 times in their lives. So it may be an accident, it may be a separation in the family, it may be something hurtful, maybe you lost some money, maybe a business deal went bad. Those traumatic experiences, our energy gets frozen in that experience. And what happens when we move ahead in life? Our pranic force keeps decreasing. This is the time in your 50s when we must go back to that experience, mentally go back to it, memorize it, reclaim your energy and bring it back into the present if you want to stay healthy in the years that are about to come in the next few decades. ये बहुत जरूरी है. Usually क्या होता है कि उस traumatic experiences में हमारी जो energy frozen रह जाती है, जो हमें available नहीं है, उसी की वजह से disease and illness strikes us in the decades that follow. So this is again an important aspect, an important purpose of the 50s. And the fifth purpose of the 50s is we must rediscover childhood passions and interests, because पहले कभी समय नहीं मिला. अब 50 की उम्र में आके जब बड़े बच्चे हो जाते हैं, जब businesses भी settled हो जाते हैं, this is an opportunity for us to discover our creativity again and to connect with it. What is the warning in the 50s? A lot of people struggle with accepting the aging process. You know, we start coloring our hair, we start using anti-aging creams, and we are not able to accept the fact that the body is going old. So it's very important that we do not defy the aging process and we wear our grays and our wrinkles with honor and pride, because they are a mark of learning. अब 60s में आते हैं, जब 60s में आते हैं तो क्या हो रहा होता है? 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं. And these are, number one,
is most people are either retired or are preparing for retirement. Secondly, children have flown out of the nest, so you have an empty nest. Either they've gone for higher education, or they have joined jobs and gone on their own transfers, or else they are married and they want to live on their own, or they live their own lives. So ये बहुत ज़रूरी है कि we re-acclimatize to this new stage in life when the house is empty again, and when we have to refocus on our own lives. अब यहाँ पे एक और ज़रूरी बात है, कहते हैं that when a person dies, after the journey of the 14 days after death into the afterlife, as the Garud Puran says, उसके बाद क्या होता है? It is stated, and I've had this experience in a lot of my deep hypnotherapy sessions, that we meet a group of elders called us soul guides. और वहाँ पे हमारे पास्ट लाइफ जो हमने अभी छोड़ी है, उस जीवन का एक रिव्यू होता है जहाँ पे फ्लैशेस आते हैं कि हमने जिंदगी कैसे जी, and we experience those very intimately. What are the feelings we had? Like a movie, your life is reviewed. And you also experience what are the difficulties you caused others. And then it is decided कि आपका अगला जीवन, आपका जन्म कैसा होगा, और आपका जो नेक्स्ट जन्म की लाइफ स्क्रिप्ट वहां पे डिसाइड होती है. But it is very important to do what I call the life review while you are in your 60s. You are still in your body and you have the opportunity to refine your karma. एक बारी शरीर छोड़ दिया, जब पिंड छोड़ दिया, उसके बाद आप कर्म नहीं कर सकते हैं. आत्मा सिर्फ कर्म पिंड में कर सकती है. इसलिए in the 60s, the theme must be to review your life and the purpose must be deep introspection. अब यहाँ का 5-point agenda क्या है? Number 1, identify and examine all the mistakes and regrets that you have made in your life. Very important, if you can atone those mistakes, if you can correct them, make them right, if you can take some remedial actions, please do those so that you can start building your good karma account. Having learned those, then you integrate those lessons into your life. For example, if you have had a very sharp tongue, अगर आपने in the younger years आपकी sharp tongue रही, आपके मुंह से ऐसे शब्द निकले जिससे दूसरे लोगों को चोट पहुंची है, तो अब आप ठान लें कि whenever I speak, I will speak loving words. My words will only heal other people. My words will bring knowledge to other people. In this manner, you are able to integrate and correct all the damage that you caused in your younger years when you were reckless. Third aspect is whatever lessons you have still not learned in this lifetime, very important that you start focusing on those. Now, this is very difficult reflection. ये कैसे हम पता लगाएं कि मैंने कौन सा इस जीवन में lesson सीखना था जो मैं नहीं सीख पाया. And I will give you a clue on this. It's very simple. What are the things that still make you anxious? What are the things that still make you angry? ये दो चीजें, ये सवाल आप अपने आप से पूछें. And the answer will lead you to the work that you still need to do. Because this is where you are still entangled with the ego mind. It's very important also to begin the process of detachment with your family at this stage. Now, this word is so misunderstood. People think detachment का मतलब होता है कि अब हम प्रेम करना बंद कर देंगे, हम affect नहीं होंगे अपने loved ones से, family से. No, that is not true. The word detachment simply means when you're attached, you want to manipulate and control your family. When you're detached, you leave them free. You no longer have the egoistical desire कि वो जैसे मैं कहता हूं या कहती हूं उसको वैसे ही करना चाहिए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 60s की एज में आके हम अपने बच्चों की जीवन में इंटरफेयर करना बिल्कुल बंद कर दें. वो जैसे अपना जीवन जी रहे हैं, उनको हम संस्कार दे चुके हैं, वैल्यू सिस्टम्स दे चुके हैं, अब हमारी चलनी चाहिए, इससे हमें विड्रॉ करना है. We have to stop doing this. Fourth aspect, please resolve all conflicts, all relational conflicts. This we find when I do the work with people who are about to die.
we find this is one of their biggest grievances कि मैंने पूरी जिंदगी बिता दी, मैंने अपने भाई से मेकअप नहीं किया, जो मेरे इतने फैमिली में चली आ रही हैं, 2 जनरेशन से एक युद्ध सा चला आ रहा है, वो मैंने कंप्लीट नहीं किया, मुझे करना चाहिए था। तो ये जो है, इस पे फोकस करें अपने 60s में कि अगर कोई अनबन है किसी से भी, तो उसको कंप्लीट कीजिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा, फिर से वहां पे प्रेम के बीज बोइए। ये बहुत जरूरी है ताकि हम कोई भी अपना कर्म इस जीवन का अधूरा ना छोड़ें। And finally, we must work with activities that promote our self-growth. Unfortunately, a lot of people think कि जो self-development, self-growth है, ये तो जवानी में की जाती है. Not at all. We have to continue growing till our very last breath. And I particularly want to mention at this point that we must start reading the scriptures if we haven't invested fully in that, because this is the time when we will start, our vision will start becoming poor. We develop cataracts at this age, glaucoma, and all kinds of eye-related problems. And in the following decades, we may not be able to do justice to the scriptures. तब तक तो हमें by heart याद आना चाहिए सब कुछ. तो अभी जितने scriptures पढ़ सकते हैं वो पढ़ लेने चाहिए. What is the warning for the 60s? Don't be rigid. बहुत से लोग रिजिड हो जाते हैं, मेरा परिवार है, मेरे परिवार में ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही चलना चाहिए. नो, they're very important for us to become flexible, क्योंकि जो रिजिडिटी है वो ईगो माइंड से आती है. अब हम एंटर कर रहे हैं 70s में. तो 70s की जो थीम है वो, अगर हम from the Hindu perspective we see what is the dharma, this is the time when we are entering into sannyasa, or the life of the renunciate. The theme has to be to integrate your legacy, and the purpose has to be the dawning of wisdom. एक प्रकार से you can say this is the last call to board the flight of life. इसके बाद जो समय है वो बिल्कुल different purpose के लिए होगा जो 80s का decade है. तो 70s में हमें क्या करना है? Please ask yourself, how do I wish to be remembered after I die? Let's say I wish to be remembered as a helpful and loving person. Have I done everything that is in my power to be remembered as that person, or do I need to do more helpful acts? Do I need to do those kind of actions every single day? Secondly, we also notice कि 70s में एक soul level से renewed creativity का flash आता है, which is why we find many people in their 70s, they'll start new businesses, new business ideas. Women will start, painting again, or they will start singing again, or somebody will write a memoir or a book or an autobiography or something like that. So this is your last chance, because all of the burdens of earlier life have fallen off. So the soul's creativity is shining through. This is what is called the swan song. Sweetest song that is sung, the sweetest creative effort before death arrives. So invest in that creativity if you have that urge coming through. Thirdly, transpersonal experiences जो साधना में जुड़े हुए हैं उनके बढ़ जाते हैं 70s में आके. And these can be very, very divine experiences, and they can transform you and really prepare you for what has to arrive next. I remember speaking to a lady in her 70s, और वो मेरे को बता रहे थे कि वो जब पाठ पूजा अपना जो भी करते थे, उनको गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन हुए, और उसके बाद उनकी पूरी, her whole being transformed. She was radiating knowledge, and she was able to transform her own sangat, her own satsang में वाणी बदल गई, उनकी व्याख्या बदल गई. बहुत चेंज आता है जब आपके साथ कोई ऐसा मिस्टिकल या डिवाइन एक्सपीरियंस हो, तो उसको ट्रांसफर करना कम्युनिटी को, ये बहुत जरूरी हो जाता है. नेक्स्ट इज, व्हाट मीनिंग डिड माय लाइफ हैव? ये भी एट द पॉइंट ऑफ डेथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. अगर मुझे लगता है कि मेरे जीवन का कुछ अर्थ रहा, मायने रहा, आई मेड अ डिफरेंस टू सोसाइटी, I'm able to die with a sense of satisfaction. So start asking yourself this question: what meaning has my life served? And the fifth aspect in the 70s is pass on the tradition to the next generation. Because remember, you are at the point कि जब आपके बच्चे, आपके grandchildren
आपके एंसेस्टर्स से नहीं मिले पर आप उनसे मिले हुए हो. इट्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. अपनी फैमिली हिस्ट्री ट्रांसफर करो, उनके बारे में बातचीत करो, उनको बताओ कि आपका फैमिली ट्री क्या था. वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और जो कुछ भी आप अपनी स्टोरीज एक रिकॉर्डेड वे में छोड़ना चाहते हैं, अपने मैसेजेस रिटन फॉर्म में छोड़ना चाहते हैं उन अनबॉर्न बच्चों के लिए जो आपके प्रोजेनी होंगे, योर ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन और द ग्रैंड चिल्ड्रन हु आर येट टू अराइव, must receive the knowledge that your life has served. What is the warning for the 70s? Many people start clinging to their childhood memories. अगर देखा जाए तो वो बार बार वही बात रिपीट करते हैं कि जब हम ऐसे छोटे थे, हमारे गांव में ऐसे होता था, हमारे पिंड में ऐसे होता था. उसको छोड़ दो. वो अटैचमेंट वापस आ रही है, मोह वापस आ रहा है. And it is important to let go of that. So the 70s is the age when we must play the role of the wise elder, and we must become the bridge between our ancestors and future generations. Finally, we reach the 80s. 80s is a time when the body is failing the senses. We can't see as well, we can't hear as well, we can't walk as well, we can't do the things जो पहले हम 10 मिनट में कर लेते थे, आज आधा घंटा लगता है शर्ट का बटन लगाने में. बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है. However, 80s का थीम है faith singularly. Purpose is dissolve your ego mind and build your divine connection. It is very important that we spend a large chunk of our time in the 80s in spiritual growth, praying, meditating, chanting. Secondly, cutting the strings of attachment. और ये कैसे करना है, इसकी आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब टाइम आएगा ना शरीर छोड़ने का, तो बहुत तकलीफ होती है. I've seen people at the moment of death saying, how can I give up my body? I don't want to go, save me, किसी तरह से मुझे बचा लो. तो पहले वो चीजें दान करना शुरू कर दो. Start making your wardrobe light. Start giving away things. Family में जिसको भी देनी है. Become light. That is not, if you want to become enlightened at the moment of death, तो अभी से हल्का होना पड़ेगा. अपनी चीजें देने चलो. और interference in daily life बिल्कुल reduce कर दो. Even otherwise we notice the sensory mind is telling us that अगर कुछ दिख नहीं रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, तो हमारा शरीर हमें यही कह रहा है, go inwards. Also, accept your disabilities. Don't get frustrated that I can't see, I can't hear, I can't walk, I'm bedridden. Turn your mind inwards and build fortitude. ऐसा कहा जाता है कि 63 years of age के बाद, up to 63 years, we are burning the karma of the previous janam, जो हम प्रारब्ध लेके आए हैं. 63 years के बाद जो भी हम कर्म करते हैं, वो हम ब्लूप्रिंट बना रहे हैं अगले जन्म का. तो जो भी हमारी वृत्तियां रहेंगी, टेंडेंसीज, एटीट्यूड्स, हैबिट माइंड रहेगा, वो डिफाइन कर रहा है कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा. So please be more tolerant about your disabilities in your 80s. Fourth, it becomes important to overcome the fear of death if you want to die fearlessly. And the way to do that is to meditate every single day. Now I find people in their 80s telling me, बैठा तो जा नहीं सकता हमसे, हम कैसे meditate करें? And I'm saying, शवासन में आप बिस्तर पे लेट के अपना attention breath पे ला के आप जप करो, या तो जप से जुड़ो, सतनाम सतनाम करना है तो वो करो, हरे राम करना है तो वो करो, ओम शांति से जुड़ना है तो उससे जुड़िए, जिससे भी जुड़ना है, या ब्रेथ से, सिर्फ श्वास से जुड़ना है तो उससे जुड़िए. But you must practice how to die, because death is not easy. You can't learn how to drive a car when you're about to have an accident. तो अगर आप सोचते हैं कि death will arrive और मैं उस समय मेरी attention प्रभु से जुड़ जाएगी जब मैं इतना भयभीत होऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है. उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. And finally, the fifth aim or purpose of the 80s is to prepare for the great unknown. And this is पूरी तरह से अपना मैं डिसॉल्व कर दिया जाए. अब 3-4 दिन पहले हमारे एक one of my earlier teachers, inspirers, मिसेस इंदू जैन, जो टाइम्स ग्रुप की चेयरमैन रही हैं,
जब मैं बहुत छोटी थी, 18 साल की थी, तो उन्होंने मेरे को बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंस्पायर किया था। उन्होंने शरीर छोड़ा एंड आई रियली अप्रिशिएटेड एंड लाइक्ड हाउ शी सेड हर लास्ट वर्ड्स। उन्होंने चिट्ठी में जब लिखा कि everyone has talked about the secret of death, what will happen on the other side. There will definitely be something new on that side and I am eager to find that out. ये तरीका है मरने का, एक्साइटमेंट के साथ, जॉय के साथ, not with fear. So ये तो तभी होगा अगर हमने प्रैक्टिस पूरी तरह से की होगी. So 80s is a time where the objective is to renounce worldly existence and prepare for the great unknown on the other side with a sense of excitement. Research has found that you age much better if you have a purpose. There is evidence to prove that you will be physically better off, mentally better off, emotionally better off, and psychologically more healthy if you embrace your purpose. So my invitation to this very, very erudite group here today is, please embrace your purpose actively and live the fullness of your life. आपने जो फरमाया मैडम, हाँ जी, दिल खुश हो गया और रूह आबाद होगी। थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, रूह को बड़ा सुकून मिला आपकी बात सुन के। थैंक यू। अभी आपके साथ एक सवाल करना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ स्मॉल क्वेश्चन। आई डू नॉट नो whether I'll have to answer to it because अभी तक तो आंसर मिला नहीं कभी, लेकिन आप सब महफिल के सामने बैठे हैं और सबको अपने बयान बहुत अच्छा दिया है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि देखिए, आपने 60, 70 साल, 75 साल, 80 साल के 100 साल की जिंदगी आपने बता दी गुजारने के लिए। इंसान कर्म अच्छे करता है, कोशिश करता है अच्छे कर्म करने के, इसलिए करने के लिए कि एक वक्त आएगा मरने के बाद ये 84 लाख जन्म को छोड़ के हम परमात्मा के साथ मिल जाएंगे। Our endeavor is to meet the so-called Lord. Therefore, we do our good karmas one after the other. 84 लाख जन्म होते हैं, उसके बाद हमारे को इंसान का जन्म मिलता है। और इस जन्म का अगर हम पूरा फायदा उठाएं तो अपने गुरु की शरण में आके हम उसकी अगर प्रतियोगिता करें तो प्रे करें कि हमारे को इस जन्म से हमारे को छुटकारा पाया जाए। सवाल अभी सिर्फ ये आता है, मान लिया ये बात सही है, आपने जो फरमाया बिल्कुल 100% है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल अभी ये आता है कि जब हम इतनी मेहनत करने के बाद 84 लाख जन्म के बाद अगर हम जीरो गए तो समझ आएगी पता नहीं कितने जीरो लग जाएंगे इस बार। तो इस जन्म के बाद 84 लाख जन्म के बाद इंसान के जन्म के बीच में अगर हमने 50-60 साल की बड़ी छोटी सी जिंदगी है कंपेरेटिवली टू 84 लाख स्पीशीज, उसके बाद अगर हम परमात्मा के साथ मिल जाते हैं तो सवाल अभी ये आता है, ये क्या प्रूफ है कि हम दोबारा दुनिया में जन्म नहीं लेंगे? वेयर इज द प्रूफ? बिकॉज आफ्टर ग्रेट डिफिकल्टी we go back to the Lord. Then where is the proof? I think and how do we endeavor? I think your question, what you're really asking, if I hear Yeah. you very closely, is not where is the proof. You're asking me कि अगर मैं परमात्मा से फिर मिल जाता हूँ तो उसके बाद क्या होता है? हाँ, हाँ, उसके बाद क्या होता है? क्या तो हाँ. नहीं क्या होता नहीं, I rectify the question. आपने 90% ठीक बात करी। अल्टीमेट क्वेश्चन है कि मेरे के पास क्या प्रूफ है कि मैं परमात्मा से मिलने के बाद ये 84 लाख जन्म में मुझे क्यों भेजा जाएगा? Because if we are going back to the perfection and we become perfect and God is perfect and we come one with him, then there is a proof that we will not come back to this world again and become imperfect again, because काम करोड़ मौत में हम फिर पढ़ेंगे, फिर 84 जन्म में जाएंगे, एक्सेट्रा। बताइए। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि ये इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है। अगर मैं आपको डिफाइन करूं ऑरेंज इंटेलेक्चुअली, तो क्या आप ऑरेंज का फ्लेवर चख सकेंगे? मेरे से पूछ रहे? आपसे पूछ रही हूँ कि मैं अगर सिर्फ मैंने मान लो जिंदगी में कभी ऑरेंज खाया नहीं है, हाँ, पर मैंने उसके बारे में बहुत पढ़ा है, हाँ, तो मैं आपको बोलूंगी ऑरेंज ऐसा होता है, उसमें इतने सेगमेंट्स होते हैं, बीज होता है, उसकी स्किन होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सिट्रस होता है, पर क्या मैं उसका स्वाद जान पाऊंगी? So the proof of the pudding lies in eating it. नहीं जान पाऊंगी। हाँ, तो मैं मान लिया। The question is this. The question is this. Even in this birth, I find कि जब मेरे को पता है 20 साल की उम्र में भी उतनी नॉलेज थी जितनी आज है। फर्क क्या है कि आज मुझे एक्सपीरियंस है,
20 साल की उम्र में जब मुझे कोई मैं प्रवोक होती थी तो 3 दिन तक मुंह सूजा रहता था। आज जब कोई मैं प्रवोक होती हूँ तो 3 मिनट है मेरे पास, मैंने अपने आप को 3 मिनट दिए, गेट ओवर इट। कैन आई डू इट? यस आई कैन टुडे। मालिक सलामत रखे आपको। क्योंकि वो साधना का एक्सपीरियंस है, करके ही पता चलता है। अगर मैं आपको कैसे बता दूं, मैं तो यहाँ बैठी हूँ, मेरे तो प्रारब्ध इतने हैं, मैं तो अपने प्रारब्ध काटने की कोशिश कर रही हूँ। अभी तो यही है कि प्रारब्ध ही समाप्त हो जाए, पर इतना जरूर मैं जान पाई हूँ कि जब जब दिल से कोई काम किया जाता है और मैं नहीं होता उसमें, अपनी ईगो नहीं होती उसमें, तो वो एक निष्काम कर्म होता है, उसका सुख अलग ही है। और अगर वो सुख मैं पहचान पाई हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो जो हमारे मालिक कह के गए हैं, हमारे गुरु कह के गए हैं, उन्होंने तो एक्सपीरियंस किया था ना। जब गुरु नानक देव जी ने जपजी साहब बोला तो वो तो उन्होंने तो एक्सपीरियंस किया था, तो वचन उन्होंने दिया है तो सच्चाई है, उसको बोलते हैं फेथ। मैं उसे क्वेश्चन नहीं करती क्योंकि मेरा फेथ डीप है। अगर आप इंटेलेक्चुअली क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये आप फेथ को डीपन करें, क्योंकि कोई भी इंसान सिर्फ ज्ञान योग पे नहीं चल सकता। इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ज्ञान, भक्ति एंड कर्म। तो ज्ञान योग हो सकता है कि आपका बहुत तीव्र है, बहुत तेज है, पर शायद भक्ति कम पड़ रही है कहीं, तो उस भक्ति को बढ़ा लें थोड़ा सा, तो ये सवाल भी खत्म हो जाएगा आपका। कोशिश तो बड़ी कर रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जो जवाब है ना, अभी तक नहीं मिल रहा है कि हम इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी भक्ति करने के बाद, इतनी समझ के बाद, और मेरी उम्र भी तो 75 की हो गई है, हमने बदरी कोशिश बहुत करी है, अभी गुंजाइश है थोड़ी बहुत और कर रही, करेंगे, जरूर करेंगे, मालिक सलामत रखे, अपनी दया में बख्शे, वो भी करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि बार बार हमारी आपकी फेथ में थोड़ी कमी है। फेथ का मतलब ही क्या होता है? फेथ तो मुझे बहुत है। फेथ का मतलब क्या होता है ये बताएं। फेथ का मतलब क्या होता है? फेथ का मतलब होता है हमने अपना जिस्म, शरीर, अपनी आत्मा सब उसके सरावर कर दिया हमने, उसकी मोहब्बत के अंदर हम पूरा जुनून में पूरा लगे। नहीं, मैं थोड़ा सा माफी मांगूंगी। फेथ का मतलब ये होता है बिना जाने किसी सच को एक्सेप्ट करना, और उसकी तो प्रूफ नहीं, किसी की प्रूफ नहीं मांगना। देखो, अगर हमारे गुरु ने कहा ये कर्म कर, तेरे लिए अच्छा है, और मैं गुरु से आर्ग्यूमेंट करने लग जाऊं, नहीं गुरुजी आप बताओ ये क्यों करूं मैं, तो मेरी फेथ कमजोर है। तब वो बोलते हैं, तब हमें कहते हैं कि बेटा तेरी फेथ कमजोर है, जब मैंने बोल दिया तेरे को तो तू क्वेश्चन कर रही है। मान लिया, तो हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, फेथ नहीं है। बिल्कुल फेथ है, 100%, 110%। आपके जो भी गुरु हैं, अपने गुरुओं के वचन पे फेथ रखें बस। हाँ वो तो फेथ है, वो तो पूरा है। भक्ति बढ़ा ले। पूछा, आपकी बात इतनी, आपका इतना भाषण सुन के बहुत दिल को सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा शायद अभी इसके ऊपर कुछ हमारी दिल की जो तमन्ना है थोड़ी बहुत, इसके ऊपर आप थोड़ा गौर करके बताएंगे। आपकी दिल की तमन्ना बड़ी सिंपली हो सकती है। यहाँ से अपना अटेंशन लेके हृदय तक ले आए और पूछिए अपने आप से, हे प्रभु क्या ये सच है, मैं तुझे पालूंगा तो तेरे पास ही रहूंगा? बस ये बता दीजिए, क्या रहेंगे उसके पास में? आपको जवाब मिलेगा कि नहीं? आपने बहुत भक्ति करी है, किताबें लिखी है, आप बताइए उसके बाद रहेंगे क्या? मैंने तो अपना जीवन ही इसीलिए छोड़ दिया है। और आपको एक बात मैं शेयर करती हूँ, बड़ी, इट्स अ वेरी प्राइवेट थिंग, पर 4-5 दिन पहले ऐसे आई टेकन माय सेकंड वैक्सीनेशन शॉट, और सेकंड डे मेरे को बहुत सिवियर से सिम्टम्स होने लगे कोविड के, which was surprising because मैं बिल्कुल ठीक थी। और मुझे याद है कि मैं 3 बजे रात को उठी हूँ और मैं बैठी हूँ और मुझे ऐसे लगा कि शायद कल सुबह उठूंगी नहीं। मेरे मन में 2 ही विचार थे। पहला विचार ये था कि हे प्रभु अगर तेरी इच्छा है बुलाने की तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मेरा रिग्रेट क्या रह गया? और रिग्रेट 2 ही थे। एक रिग्रेट ये था कि मेरा बेटा सिंगापुर में पढ़ रहा है, उससे मुलाकात नहीं हो पाई। 2 बारी उसने ही ट्राइड टू कम टू इंडिया बट ही कुडंट कम बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन हियर। और दूसरी मेरी ये थी कि हे प्रभु जो मैंने सोचा था जितनी सेवा करके जाना है इस जन्म में, वो सेवा मेरी पूरी नहीं हुई, पर अगर तेरी ये इच्छा है, तेरी
तुझे जरूरत है मेरी तो मैं आने को तैयार हूँ। ये बोल के मैं अपना पाठ करते करते सो गई हूँ। और मैंने ये सोते हुए ये बोला, या तो मैं उठूंगी, नहीं उठूंगी कल सुबह, और या उठूंगी और मेरा एक भी कोविड सिम्टम नहीं होगा। आई वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, देयर वाजंट अ सिंगल कोविड सिम्टम, इट हैड वाह। वैनिश्ड। तो कहने का मतलब ये है कि उस गुरु की अरदास जब हम करते हैं ना, तो उसमें सवाल नहीं होता, सिर्फ फेथ होता है। जो मेरा वो तो सही गुरु, बात जो है। मेरा मालिक बोले वही सही, बस। मैडम, मेरा नाम विकास, रोटेरियन विकास सेठ है। हाँ मैंने जी। ऐसा कहीं सुना, एक 1940 के स्पीकर हैं, उन्होंने ऐसा बताया अपनी स्पीचेस में कि वंस यू गिव अवे दिस गारमेंट ऑफ लाइफ, वो एक डिफरेंट फॉलोइंग है, वो आई थिंक बाइबल की फॉलोइंग है जो मैंने पढ़ी या सुनी। तो उसमें वो कहते हैं कि यू अटेन अ न्यू, ब्रांड न्यू 20-year-old काइंड ऑफ अ यूथफुल बॉडी। कुछ ऐसा उन्होंने जिक्र बार बार करा। और जो आपने फेथ की बात करी, वो तो पूरा उसी पे वेल बीइंग, अगर मैं वेल बीइंग हूं तो मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, वो भी यही कहते हैं जो आपने अभी अभी अपने टॉक में हमें समझाया। उसके लिए असीम फेथ होना चाहिए। इट कैन नॉट बी 50-50 और 80-20। बट ये जो पॉइंट शायद आपने पढ़ा होगा, क्योंकि आप इंटरनेशनली लोगों के साथ, मैंने सुना आप लेक्चर्स करते हैं और उनको बताते हैं, तो कुछ इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? और दूसरा, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें वैतरणी का एक व्याख्या है, कुछ उसके बारे में, उसको पार करना पड़ता है और वो एक बहुत ही भयानक सीन होता है। कुछ अगर आपको ठीक लगे, यू आर द बेस्ट। So Vikas, Vetarni, just help me understand that. I am not as good in my Hindi as you are. That's the river of demise when you pass. Okay, I got that. So two wonderful questions, and I will attempt to answer these. So Vikas, the first thing is that not everybody attains a youthful garment after they leave. It depends on how much sadhana you've done, how much alignment with purpose you've had in the present, in the life that you have just exit. जो जीवन आपने अभी आपका समाप्त हुआ है, अगर आप नियम, यूनिवर्सल लॉज के हिसाब से आप एक बड़ा अलाइंड जीवन आपने जिया है, अगर आपने अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकता किया है, if you entered into life with less, whatever degree of darkness you entered into life with, if you have left that life with more sattva than the degree of tamas that you came into that life with, then you are likely to attain a youthful garment. Also, it depends on the moment of death. If you have died with a terrible death, with disease, with a lot of agony in your mind, then again your garment is not youthful, because you are so attached to that kind of body, which is the reason when I was talking about the 80s and I said, please accept your disabilities, because there is this deeper understanding, and I've done a lot of work with death. In fact, my next book is about death and dying. So these 2 points: live a life aligned to universal principles, constantly contemplate on the karma that you're performing and aim to correct the poor karma that you have committed in your youthful reckless years. And the third thing may I interject at this point? See, sure, go ahead. See, the prarabdha which you mentioned, the moment I say to the Lord that this belongs to you, then where am I? I am not there at all. जब मैं था तब प्रभु नहीं, प्रभु है मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी दू या मैं समाए. So Vikas, this is the problem with the intellect. Okay, the problem with the intellect is that it will use logic to its own advantage. Now, in what you just defined, you're trying to say कि मैं तो था ही नहीं, तो अगर मेरे गलत कर्म है वो भी प्रभु ने किया, मैंने थोड़ा ना किया, मैं ओनरशिप ही नहीं लेना चाहता अपने गलत कर्मों की, राइट? पर पूरी जिंदगी
तो मैं अपनी ईगो माइंड से चलता रहा ना। निष्काम सेवा मैंने कब की है? क्योंकि अगर निष्काम होती तो गलत हो ही नहीं सकती थी। निष्काम नेचर में होती है, which is why I opened my talk with a close examination of nature. All clues about universal laws are hidden in nature itself. नेचर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। आज अगर कोविड क्रिएट हुआ है नेचर में, वो भी बैलेंस रीबैलेंस करने के लिए क्रिएट हुआ है, because we have become so misaligned with universal laws. So that is the answer to your first question. पूरी जिंदगी में मैं फंसा रहा और फिर मैंने प्रभु से कहा ये कर्म तो तेरा है. Sorry, that is not acceptable. That is a wrong use of the intellect, I would say. Your second question was something about crossing the river of life. Is it true, you said, that we have... So Garud में I think जो expressions दिए गए हैं, अगर हम ओरिजिनल विष्णु की इंटरप्रिटेशन देखें तो वो इतनी भयानक नहीं है. उसको what I will call lost in translation, उसको भयानक बना दिया गया है. You see, if you see the original conversation between the Garud and Lord Vishnu, it is actually very, very simple. And I will be, in my forthcoming book, I will put those elements in so that we can take away all the fear factor. But fact is very simple. I'll tell you why the afterlife journey is difficult. जब हम जीवन में है ना, तो हम अपने coping mechanisms इस्तेमाल कर लेते हैं कि जब अंदर चिंता होती है. For example, currently I find a lot of my clients are extremely fearful about what's happening with COVID. So instead of dealing with the fear, what are they doing? They are binge watching Netflix. ठीक है? तो कोई लोग जो है जिसको मैं addictions बोलती हूँ, escape addictions, कोई शराब पी लेता है, कोई सिगरेट में फूंक देता है, कोई binge watch कर लेता है. So we find ways of avoiding our fear because we have a body and we have a personality. पर जब हम शरीर ड्रॉप कर देंगे तो उसके साथ पर्सनालिटी ड्रॉप हो जाती है. सिर्फ सूक्ष्म शरीर जाता है. और सूक्ष्म शरीर क्या है? माय इमोशनल बॉडी, माय मेंटल बॉडी, माय स्पिरिचुअल कॉजल बॉडी. तब मैं अपने डर से एस्केप नहीं कर पाऊंगी. तो या तो मैं डर को इधर ही फेस कर लूं या मैं शरीर छोड़ने के बाद करूंगी. विच इज ईजियर? That is why I consciously work with everything, and my principle is very simple. Whatever you can overcome while you're still in the body, while you're still embodied, only that is a victorious life. Thank So you. I hope I've been able to answer your questions. Thank you for your exposition. Thank you so much.